Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we do not address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. For listeners calling from outside Delhi, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज सोमवार है, इसलिए हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23421050 पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 जरूर डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ हैं हमारी सहयोगी अनुभा रोहतगी। Thank you, Vibhuti. Prime Minister Narendra Modi addresses National Handloom Day celebrations in Delhi, says government working to provide world's biggest market to its weavers. Domestic benchmark indices end higher for second consecutive session. Sensex rises 232 points while Nifty settles near the 19,600 level. And oil prices surge to 4-month high after announcements of output cuts by Saudi Arabia and Russia. दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। बोले, बुनकरों को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार दिलाने के लिए सरकार काम कर रही है। लगातार दूसरे सत्र में ऊंचे बढ़त के साथ घरेलू शेयर बाजार बंद। सेंसेक्स में 232 अंक की तेजी, जबकि निफ्टी 19,600 का स्तर के करीब बंद। और सऊदी अरब और रूस के उत्पादन में कटौती की घोषणा के बाद तेल की कीमतें 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। And let's begin with the top story of the day. Prime Minister Narendra Modi today took part in the 9th National Handloom Day celebration at Bharat Mandapam at Pragati Maidan in Delhi. Addressing the gathering, Mr. Modi said, "Vocal for local has become a mass movement, which has given a new impetus to the textile sector in the country." He asserted that the government is working with a clear strategy to provide the world's biggest market to its weavers. The Prime Minister said big companies of the world are coming forward to take the products of India's MSMEs, weavers, artisans and farmers to the markets across the world. The Prime Minister asserted that there is a new revolution in the country about Swadeshi. He expressed pride in the success of India through the achievements of its weavers. Mr. Modi said that to promote the handloom industry, the government is giving loans without guarantee and providing raw material for the handloom weavers at discounted rates. Talking about the government e-marketplace or the GEM portal, the Prime Minister said now every small enterprise can sell their product on GEM directly. He mentioned that the government is working to set up Ekta malls across the country to increase the sale of handicraft products of all states. Mr. Modi said that today the textile industry has reached 1,30,000 crore rupees. And we now have the first caller of the day online with us. That is Mr. Vikas Mahato from Kolkata. Mr. Mahato, welcome to Market Mantra. Please ask your question. जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें। नमस्ते, मैं विकास महतो एयरपोर्ट कोलकाता से बात कर रहा हूँ। जी अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल एक ही है कि डिफेंस सेक्टर में जो ऑर्डर है, हेलो जी हाँ पूछिए प्लीज। डिफेंस सेक्टर को जो ऑर्डर है इस साल का, इससे पहले ऐसा ऑर्डर आया था और पब्लिक
बैंकिंग सेक्टर जो पोजीशन है और आगे फ्यूचर क्या है? ओके, देखिए सबसे पहली जो बात आपने डिफेंस सेक्टर की बात कही है, काफी अच्छे ऑर्डर, शिशिर जी, हाँ काफी अच्छे ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। अच्छी बात ये भी है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं उनको भी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट और एक्विजिशन का जो फायदा है उनको मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज हैं, उन दोनों में आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। दूसरा जो सवाल आपका बैंकिंग सेक्टर का है, देखिए बैंकिंग सेक्टर के लिए इस समय में एक बड़ी चुनौती ये भी है कि जो ब्याज की दरें हैं, खासतौर पे जो कर्ज की बात है, वो अभी ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। तो एक थोड़ी आशंका जरूर बनी है कि कर्ज देने की रफ्तार कहीं कम ना हो जाए, इससे उनके कमाई पर थोड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल जो मूड है वो अभी फाइनेंशियल सेक्टर के लिए थोड़ा बेहतर नजर आ रहा है और इसका फायदा बैंकिंग सेक्टर को भी मिल रहा है। इसी बीच दिल्ली से हमारे श्रोता हैं अभय जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। क्वेश्चन ये था सर, ये जो महिला सम्मान निधि योजना है और किसी का अगर अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी है, सेविंग अकाउंट, और किसी का उसी कैंडिडेट का अगर बैंक में भी सेविंग अकाउंट है, तो क्या ये दोनों जगह में 2-2 लाख का डिपॉजिट कर सकते हैं या उसको एक ही डिपॉजिट करने का अनुमति है? देखिए जितना भी आप खाता खोलना चाहें, चाहे वो बैंक में आप खोल रहे हो, डाकघर में खोल रहे हो, किसी भी सूरत में कुल रकम जो वो 2 लाख से ज्यादा की नहीं होगी। एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि आप चूंकि जब भी खाता खोलने जाते हैं, चाहे वो बैंक में आप खोल रहे हो, पोस्ट ऑफिस में खोलने जा रहे हो, आप अपना पैन नंबर देते हैं और पैन और आधार अब दोनों लिंक है। तो ऐसी सूरत में आपके लिए ये संभव नहीं है कि आप अपनी पहचान को एक जगह पे अलग दिखा रहे हैं, दूसरे जगह पर अलग दिखा रहे हैं। तो इससे आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा कि दोनों जगह पर आप अलग अलग रकम के खोल रहे हैं। कुल रकम ग्रॉस जो है वो आपका 2 लाख रुपए होना चाहिए। ये इस महिला सम्मान निधि की सबसे बड़ी शर्त है। Shishir, the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, today inaugurated, he took part in the 9th National Handloom Day celebrations in Delhi. And he said that vocal for local, the slogan that he gave, has become now a mass movement. So, talking about the handloom industry, while India does have a very vast, rich and centuries-old tradition of handloom weaving, the sector also has economic, significance. How important is this sector? What is its contribution for the economy of the country? Certainly, handloom and handicraft sectors, if you talk about the formal as well as the informal sector, give a large number of employment. So, considering the significance of employment and considering the significance of their contribution in overall export, it is these sectors are very, very important from the overall economic growth point of view. We should also remember that a large number of handicraft and handloom industries are in rural area or semi-urban area. So even for the rural economy, development of handicraft and handloom sector is very, very critical. And we all know that how the KVIC, that the Khadi and Village Gramodyog industries are doing all the work to promote the artisans, to provide a marketplace for them. There are also the online systems are available. And at the same time, if the handicraft worker is interested in selling its produce on the e-commerce platform, he is not required to take GST registration. So all these kind of facilitations are there, and I believe that the development of this sector is not just critical from the rural economy point of view, but also from the overall economy point of view. Right. And now our next caller is from Bangalore, Mr. N.R. Prasad. Mr. Prasad, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Prasad from Bangalore. Mr. Sinha, 2 questions. My first question is, RBI policy meeting is scheduled on the 10th of August. What will be the likely decision and how would it impact stock market maybe later in this week? My second question is, FPI withdrawal has taken place about 2,000 crore in the month of August. Just 5 trading days, 2,000 crores gone away. So, is there any sector is getting affected, or how would it impact the Indian stock market? Thank you. These are my 2 questions.
Okay, coming to your first question about the Monetary Policy Committee, you rightly mentioned that this week there will be 3 days meeting, and at the end of third day, which is on the August the 10th, the RBI will announce MPC's recommendation. What we are expecting that there will be no rate change because we all know that inflation is slightly rising up, and also the inflationary expectation is that it will further go up in coming 1 or 2 months because of the vegetable prices and because of some other food prices. So at this moment, we are not expecting any kind of rate revision, even during this current fiscal or during the next fiscal. The possibility of rate revision is very far. I mean, we will have to wait for that. But one thing is very important, that the commentary of RBI governor will likely to talk about the hawkish stance considering the inflationary expectation. So if you say, I can just sum up what MPC can do. No change in repo rate. That is what we are expecting. The stance may have some hawkish thing, and they will also give a revised estimate for the retail inflation. In terms of impact on the stock market, of course, the stock market is expecting kind of some softer stance, which they may not see. And if we are seeing any kind of rate hike in Europe as well as in the US, so stock market may have some kind of negative impact on that. But considering the domestic development in terms of policy, in terms of consumer demand change, all those things are going to positively contribute in the stock market. Now, your second question was about the FPI withdrawal of over rupees 2,000 crore during the last 5 trading sessions. The sectors which are affecting are mostly, the IT sector is also getting affected because of the lower allocation by various countries, various economies. And if we have seen the result of IT majors, the projections for the coming quarters are not very encouraging. So all those things are affecting IT sector. In terms of financial sectors, we are seeing some kind of pressure because of credit growth scenario. But overall, the financial sector things are appears to be slightly positive. So IT sector may have some impact on that, but other sectors will see some positive things in terms of the FPI interest. इसी बीच थाने से हमारे अगले श्रोता हैं गुरुनाथ जी, नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, शिशिर सर को भी नमस्कार। नमस्कार सर। सर, मेरा क्वेश्चन तो है, जो बैंक से लोन उठाते हैं होम लोन या व्हीकल के लिए, तो सर ये जो मार्जिनल जो कॉस्ट लैंडिंग रेट है सर, ये मतलब हम जिस रेट से इंटरेस्ट जिस टाइम होता है उस हिसाब से हम लेते हैं, तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट ये जो बढ़ाते हैं और EMI में जो बढ़ोतरी होती है, तो ये सर क्या मतलब आरबीआई की उसमें डिसीजन होता है या बैंक अपना जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की बैंक के जो होती है, तो ये क्या निजी इनका ये डिसीजन होता है जो उस EMI इंटरेस्ट उस हिसाब से हमको EMI देना पड़ती है? थैंक यू सर। गुरुनाथ जी, आपका जो सवाल है, जो मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट सिस्टम, ये कुछ समय पहले तक था, और अब जो हम लोग सिस्टम फॉलो करते हैं वो होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट और मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट के बीच का मैं आपको अंतर, थोड़ा सा जो बेसिक अंतर है वो बता दूं कि जो मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट होता है कि वो लागत, जो फंड की लागत है उसके आधार पर है, और जो एक्सटर्नल बेंचमार्क है उसमें कोई एक हम इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं। जैसे अभी के समय में बैंक जो है वो रिटेल लोन और MSME लोन के लिए रेपो रेट को आधार बनाते कि रेपो रेट में जो चेंज होगा उसके आधार पर चेंजेस होंगे। चाहे हम BPLR की बात करें, जो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट था, या बेस रेट था, या MCLR बेस्ड लेंडिंग रेट की बात करें, या EBLR की बात करें, सभी में एक कॉमन फैक्टर होता है, वो है कि आपके जो असेट और लायबिलिटी, यानी कि आप जो जमा देते हैं आप जो जमा ले रहे हैं उस पर कितना इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, और जो कर्ज है उस पर कितना ज्यादा आप इंटरेस्ट वसूल रहे हैं। तो इन दोनों के बीच के अंतर को बनाए रखना एक निश्चित स्तर पर, ताकि बैंकों का जो मार्जिन है वो बना रहे, उसके आधार पर ये फैसला होता है। मूल प्रश्न आपका था कि फैसला कौन करता है। सभी बैंक अपने अपने स्तर पर, जो बोर्ड होता है
वो असेट लायबिलिटी कमिटी आल्को जिसको हम लोग कहते हैं उसके आधार पर ये तय करते हैं कि जमा पर और जो कर्ज है उस पर ब्याज की दर क्या हो। समय है घरेलू शेयर बाजार का हाल जानने का। तो घरेलू शेयर बाजार आज लगातार दूसरे सत्र में बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स 65,900 अंक के ऊपर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 19,600 के स्तर के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 232 अंक या 0.35% बढ़कर 65,953 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी 80 अंक या 0.41% बढ़कर 19,597 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स 0.6% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.3% बढ़कर बंद हुए। We have with us Anil Ahuja from Delhi, but before we take his call, let us have a detailed look at the stock market. Domestic benchmark indices ended higher for the second consecutive session today. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed above the 65,900 mark, while the Nifty 50 at the National Stock Exchange settled near the 19,600 level. The Sensex rose 232 points or 0.35% to settle at 65,953. Similarly, Nifty advanced 80 points or 0.41% to finish at 19,597. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.6%, while the small-cap index was up by 0.3%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 21 firms appreciated, while 9 declined. Mahindra & Mahindra surged 4.2%, Sun Pharma climbed 1.9%, and Bajaj Finserv advanced 1.4%. On the other hand, SBI slumped 0.9%, followed by Tata Motors, which slipped 0.8%, and Axis Bank shed 0.5%. In sectoral indices at the BSE, except for 4 sectors, rest 16 locked gains. Among top gainers were the healthcare sector, which jumped 1.6%, followed by telecommunications, which climbed 1.3%, and information technology appreciated 1.1%. On the other side, the utilities sector slid 0.3%, while power and BankX fell 0.2% each. The overall market breadth was positive, as shares of 1,981 companies appreciated and 1,721 companies declined. A total of 185 shares remained unchanged. And now let us take the call and the query from Mr. Anil Ahuja, who's calling us from Delhi. Mr. Ahuja, welcome to Market Mantra. Please ask your question. Good evening, team. My simple question is, when the company announces dividend, the X date after that, how many days the dividend should come into the account? I just wanted to know this. Thank you. Mr. Ahuja, as soon as the company announces and declares the date for distribution of dividend, so shareholders on that day in the book of that company, they get dividend. Normally, it does not take much time. It all depends upon the policy, I beg your pardon, the announcement and the implementation. It doesn't take much time. And considering the digital mechanism we have, like NEFT or RTGS, the time is very short. Earlier, they used to be when we have to wait for check. Right. Shishir, we saw that the markets today ended in green. In fact, this is the second straight session. Last week, we saw quite a bit of volatility. There were 3 sessions, 3 days of straight when the markets were in red. Then Friday, the markets ended in green. And again, today, we are seeing, more than 200 points hike. What do you attribute it to? So if you talk about the last week, of course, there was one particular region when one particular rating agencies downgraded US, and that had impact on the overall market, not just in India, but overall Asia as well as in Europe. So that was one specific region why we saw volatility in the Indian market last week. Now this week, what happened today, I think that's a very interesting thing, that when the crude thing happened, when the Saudi and Russian decided to extend the voluntary cut for one more month till the end of September, there was expectation that the crude prices will go up and that will have some impact on the Indian market as well. But if you see the afternoon trading in the international crude prices market, we saw the crude prices slipped, and that gave some kind of comfort to the Indian equity market, and there was expectation that the prices may not go up beyond, say, $85 or $86 a barrel.
So that was one positive element which helped the Indian market to close with a gain of 200 points. Of course, there are domestic regions like the policy thing when the government is talking about PLI and other things. So these are things which are already there, but international factor was the critical today. इसी बीच दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं जगमाल जी, नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार, शिशिर जी को भी नमस्कार। नमस्कार, प्रश्न पूछिए। सर, मैं अपने HUF का करता हूं और अपने डीमैट अकाउंट से कुछ स्टॉक्स उसको गिफ्ट देना चाहता हूं, तो एक तो तरीका क्या होगा, दूसरे बाद उसके बाद जो वो डिविडेंड मिलेगा उसमें, तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा? देखिए, अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के आप करता है, आप गिफ्ट सबसे पहली चीज किसको देना चाहते हैं? अगर आपके जो ब्लड रिलेशंस में आपका गिफ्ट दिया जाता है और जिसमें कोई प्राइस का कंसिडरेशन नहीं है, मतलब जिसे कहा जाए कि कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन के बगैर में दिया जा रहा है, तो वो उनके अकाउंट में वो शिफ्ट हो जाएगा। वो एक ट्रांसफर है जिसपे आपको कोई इश्यू नहीं है। दूसरा ये है कि आप अगर मान लीजिए कि नॉन ब्लड रिलेशन में अगर आप कोई गिफ्ट देते हैं, वहां पर जो है वो रिसिपिएंट को कुछ टैक्सेशन का इम्पैक्ट पड़ सकता है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आप किसको दे रहे हैं। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि मॉनेटरी कंसिडरेशन इन्वॉल्व है कि नहीं है। तीसरी बात जो आपने कहा कि डिविडेंड जिनको आता है, तो जाहिर सी बात है कि जिस तारीख को डिविडेंड की घोषणा की जाती है, उस तारीख को कंपनी के बुक पर कौन शेयर होल्डर है, उनके बेसिस पर आप जो है उनको टैक्सेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि ₹1 भी डिविडेंड तो उस पर टैक्स देना पड़ता है। एक सर्टेन अमाउंट तक कंपनी डिडक्ट करती है, बाकी जो होता है वो आपको देना पड़ता है, लेकिन हर रुपया जो है वो टैक्सेबल है। दूसरी बात जो आपने प्रोसीजर पूछा था, तो जो शेयर ट्रांसफर एजेंसीज हैं, जो अलग अलग एजेंसीज हैं, उनके जरिए आप अपने डीमैट अकाउंट से जिनको आप देना चाहते हैं, जो रेसिपिएंट हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। And now we have the next caller from Jaipur, Mr. Jitendra. Jitendra, welcome to the program. Please ask your question. हाँ, हमारा दो क्वेश्चन है। एक CAGR के बारे में बताइएगा, CAGR क्या होता है, इसको कैसे मतलब, और दूसरा कि जैसे IPO आया तो मैंने प्राइमरी मार्केट में लगा दिया 15,000 रुपया, कंपनी के पास पैसा चला गया, अब वो सेकेंडरी मार्केट में बरसों तक उसका ट्रांजेक्शन लोग करते रहेंगे, तो इसमें कंपनी को क्या फायदा? अब तो कंपनी को पैसा नहीं जा रहा है सेकेंडरी मार्केट में। देखिए, पहला जो आपका प्रश्न है CAGR, जिसको हम लोग कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। दरअसल इसको आप समझ लीजिए कि एक तरीका है जिससे हम ये जानते हैं कि जो विकास की रफ्तार है, बढ़ने की जो रफ्तार है, वो कितनी नियमित है। कोई बहुत ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव तो देखने को तो नहीं मिल रहा है। तो CAGR एक लंबे समय तक विकास के रफ्तार को मापने का एक तरीका है, और इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, जिसके तहत 5 या 7 साल या जितने भी साल का हम लेते हैं, नॉर्मली 3 साल के ऊपर के लिए हमें CAGR लेना बेहतर होता है। तो इस तरीके से हम उसका आकलन करते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि आपने एक कंपनी के शेयर खरीदे IPO या FPO के जरिए, और वो पैसा कंपनी को मिल गया, उसके बाद जब आप खरीदारी करते हैं तो क्या होता है? देखिए, एक चीज आपको समझना है कि जो हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं, चाहे वो IPO हो या FPO हो, वहां पर आपका पैसा कंपनी के खाते में जाता है। जब आप सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं तो आपका पैसा किसी एक निवेशक के पास जाता है। अगर आप उसे खरीद रहे हैं, अगर आप बेच रहे हैं, तो कोई दूसरा निवेशक आपको देता है। इससे कंपनी को क्या होता है, आप जब कभी भी कंपनी के शेयरों की मांग करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन यानी कि उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब उसकी कीमत बढ़ती है तो जो कोई भी प्रमोटर है, उसका जो वेल्थ है, उसका जो असेट है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि दुनिया के 10 प्रमुख धनी व्यक्तियों में से एक आदमी एक भारतीय है। वो जो अमुक भारतीय है, जो एक लिस्टेड कंपनी का प्रमोटर है, उसके वेल्थ में बढ़ोतरी की, उसके संपत्ति में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह सेकेंडरी मार्केट में जो शेयर उसके उपलब्ध होते हैं, उसकी कीमत में बढ़ोतरी है। तो आप जब खरीदते बेचते हैं, उसका पैसा कंपनी के खाते में ना जाए, लेकिन कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ती है, जिसका फायदा कंपनी के प्रमोटर्स और कंपनी दोनों को मिलता है।
वक्त है कुछ आर्थिक खबरों को जान लेने का। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 10 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 74 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 102.37 पर चल रहा था। अब एशियाई और यूरोप के बाजारों का हाल जानते हैं। मिले जुले अमेरिकी रोजगार आंकड़ों के बाद एशियाई शेयर बाजारों में आज ज्यादातर गिरावट रही। जापान का निक्केई 0.2% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% बढ़कर बंद हुआ। वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% गिर गया। चीन के शंघाई कंपोजिट में 0.6% की गिरावट दर्ज हुई। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक नकारात्मक क्षेत्र में लगभग सपाट बंद हुआ। निवेशक के अमेरिकी फेडरल रिजर्व के कदमों पर मार्गदर्शन के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़ों का इंतजार करने के कारण दिन के कारोबार में यूरोपीय बाजारों में भी गिरावट आई। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी और जर्मनी के डैक्स में 0.7%, जबकि फ्रांस के कैक 0.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। Moving on to commodities, oil prices today surged to their highest levels since mid-April after top producers Saudi Arabia and Russia pledged to extend supply cuts through September, further tightening supplies. In intraday trade, Brent crude was trading at $85.34 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $81.92 per barrel when reports last came in. A very short comment, Shishir. We have seen, like you very right, you, at the beginning of the discussion, you said that Saudi Arabia, of course, has, and Russia have extended their supply cuts. But do you think one of the reasons for this price rise is also because this fear of recession all over the world is now receding? Yeah, the fear of recession is receding, and the good thing is that the demand is picking up, and that is what these Saudi Arabian and Russian companies are expecting, some surge in their profitability, some rise in their profitability. So when the recession is receding, the demand will go up. The companies who are the oil producers will be benefiting, and that could be one of the reasons why they have extended the supply cut. But what would be what could be the global implications for this price rise now? What we are seeing today, as I was telling you, that during the second half of trading in the global market, we saw the prices slightly moderated, and that gives some relief. We think that the prices will rise further. There is no doubt about that as soon as the demand will pick up. So globally, the prices will go up. And for a country like India, of course, this is not a good thing. संक्षेप में सोना का हाल जानते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर मंथ के लिए सोने की कीमत में आज 118 रुपये की गिरावट आई। सोना 59,409 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक सितंबर अनुबंध के लिए चांदी 581 रुपये की गिरावट के साथ 71,897 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। And that's all we have time for in today's program. Thank you so much, Shishir Sinha, for joining us in the program and answering the queries of our listeners. Thank you. And before we end, a look at the headlines again. Prime Minister Narendra Modi addresses National Handloom Day celebrations in Delhi, says government working to provide world's biggest market to its weavers. Domestic benchmark indices end higher for second consecutive session. Sensex rises 232 points while Nifty settles near the 19,600 level. And oil prices surge to 4 months high after announcements of output cuts by Saudi Arabia and Russia. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye from the entire team. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.